lecture, guys, is as you can see on your screens, it is related to composition of functions. Just as you add or subtract and do some algebraic operations on numbers, can such operations or can any of these operations or a likewise operation, clone operation be done on your functions? That is basically the मोटिव ऑफ दिस लेक्चर। उसी में जब हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को एक दूसरे के साथ उनको कंपोज करते हैं, उनको इंटररिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एंड व्हाट एग्जैक्टली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। So for that I would require first any three sets. Let's take any three sets as shown by your picture. The circles representing your what, any three. Let's call this as sets, basically x, y, and z. And let's define a function f. It is a function from x to y. And similarly, you have got a function g, that is a function from y to z. Okay, so if it's like that, x का एक element ले लेते हैं हम small x. This is a function of x. Basically f is a function from x to y. So हमारा ये x जो है ये relate होगा किसी unique element में, आपके जो आपका y होगा set उसमें, और हम normally लिखते हैं that ये y is equal to f of x, isn't it? We write it like this. तो इधर मेरा काम जो है ज़्यादा f of x है. This f of x in turn would be basically related to an element, let's say z, which would be basically a function of your y, isn't it? But y in turn is a function of f, so you can write that g of f of x. So something like this. तो आप देख रहे हैं ये यहाँ फंक्शन जो है ये f था और ये यहाँ पर g था, और एक फंक्शन जो कि डायरेक्टली x को जोड़े आपके z के साथ, ऐसी फंक्शन को आप बोलेंगे g ऑफ f या g ऑफ f ऑफ x, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको अभी मैंने समझाया. So such type of functions is such type of composition is known as composition of functions, and this is how you are basically relating a function with another function. This is g of f of x. Now एक चीज़ आगे हम देखेंगे, would f of g be defined or not, that is comes under the properties of your composition of functions, और उसमें देखना पड़ेगा हमें कि क्या g of f is equal to f of g always, or it's not the case, or if g of f is defined, is it the case that f of g is defined or not. So इधर पे आपने एक basic concept ले लिया कि क्या exactly है. So by composition of function you mean actually if f is a function from x to y, as you can see, if f is a function from x to y and g is a function from y to z, then g of f is basically a function g of f of x. तो इसे आप बोलेंगे composition of function, और diagrammatically आप उसको ऐसे represent कर सकते हैं. So continuing with this, what are the different what we can say remarks, or let's say some of the properties or things that we have to consider while we're doing composition of functions. The first thing is that the composition function or the composition g of f is defined. So when is it defined? It is, so g of f is defined when कुछ चीज़ें हमें इसमें जहन में रखनी है. So वो क्या होगा? When a range of f, your range of function f is a subset of a domain of G. So if you know what range and domain is, जो मैंने पीछे ही बोल दिया था आपको. So let's get back to the previous diagram. देखिए ये जो ये
x है इधर, पूरा जो x है ये इसका डोमेन बन जाएगा, और वो एलिमेंट्स जो y के होंगे जिनके साथ x रिलेटेड होगा उनको आप रेंज बोलेंगे, पूरे y को आप कोडोमेन बोलेंगे। तो g ऑफ f और ये जो सॉरी ये जो z होगा, z जो इसमें होंगे, जो इसके एलिमेंट्स y के उनके साथ रिलेट होंगे, वो रेंज ऑफ g बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपकी फंक्शन तब डिफाइंड है जब आपका जो is only defined when range of f. What is the range of f? That is basically what? The elements, these y's, y1, y2, y3, y4, so on and so forth, जो related होंगे आपके x's के साथ, ठीक है, वो जब होंगे सबसेट किसके, domain of g. Domain of g. What is domain of g? Domain of g would be the codomain basically of f, isn't it? So इसको थोड़ा बहुत जहन कर दीजिए। तो रेंज जो है आपका, range of f, range of f is basically all those y's, all those elements in set y which are basically, which have a pre-image, you can say that in x, isn't it, is a subset of domain of g. Domain of g means, domain of g basically means all of the set of y, isn't it? तो इसे गौर कर दीजिए और देख लीजिए, you can follow this or not. नहीं है तो फिर you can just revisit and see few more concept related to this. That is first and foremost, ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है. Secondly, you might have to see that if the range of g, अब यहाँ पे एक दीजिए कि f of g कब होगा. आपका जो range है, range of g, if the range of g is also a subset basically, is a subset of domain of f, ठीक है. So range of g is a subset of a domain of f, then we can define a composition of function that is f of g. उल्टा ये है f of g भी डिफाइंड. अब इस केस में क्या होगा, उल्टा हो गया आपका, कि क्या होगा, रेंज ऑफ g. अब रेंज ऑफ g क्या होगा, रेंज ऑफ g वो वाले एलिमेंट्स होंगे आपके किस में, आपके z वाले, इसमें इमेजिन मैथमेटिक्स है आपके, जो आपका क्या है, ये जो आपके इसके एलिमेंट्स जो होंगे जो रिलेटेड है किसके साथ, y के साथ, सारे एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ जो वो एलिमेंट्स होंगे जो इसके साथ z1 z2 z3, ठीक है, वो वाले जो आपके y's के साथ रिलेटेड है. तो जब आपका रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, व्हाट इज डोमेन ऑफ f नाउ, नाउ डोमेन ऑफ f इज बेसिकली योर एक्सिस, इजंट इट. सो जब ऐसा केस होगा, तो आपका f of g भी डिफाइन होगा, ठीक है. f of g is simply basically an extension, जैसे आपने g of f इसको डिफाइन किया, तो this would simply be what guys, this would be f of g of x, okay. this is your fog और कॉफ जो होता है, ठीक है. अब एक और प्रॉपर्टी, अगर आपका एफ बी एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी डिफाइन दैट. अगर ये दोनों बाइजेक्टिव हैं तो आपके फंक्शन जो है जी ऑफ एफ, ये भी बाइजेक्टिव होगा. सो बाइजेक्टिव का कंपोजिशन भी, दोनों फंक्शंस अगर बाइजेक्टिव है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा. That is one another point, important point there. What else is there? Let's have a look. हाँ, ये जो मैंने अभी आपके साथ बोला, if g of f is defined, it's not necessary that your f of g is also defined, ठीक है. So ये कहीं भी नहीं है कि if your g of f is defined and g of f of g is also defined. So इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, it may be noted that g of f may be defined but f of g is not defined, or vice versa, f of g is defined and g of f is not defined. That is another point which you have to keep in mind while going for the composition of
any two or more than two functions. What else is there? अब अगर अब दोनों भी डिफाइन होंगे, जो आपके दोनों भी डिफाइन हुए होंगे एफ ऑफ जी भी और so let's g of f and f of g both defined. ठीक है, both are defined. अब both defined तो इसका ये मतलब नहीं है, it need not to be the case that your g of f and f of g are identical. क्या ऐसा है? अगर f of g भी डिफाइंड है और f of g of f भी डिफाइंड है, क्या इसका मतलब है g of f and f of g are identical? No, it's not the case. It is not the case. Okay, remember that it is not the case. It's not necessary. ठीक है, so in other words you can say that g of f is not necessarily or not equal to f of g always. कभी कभी हो सकता है, that's a case, but it's in general you got like g of f is not, this is not, guys, remember that, is not. So keep this in mind, is not equal to f of g always. ठीक है, so that means composition of mappings is not commutative, non-commutative. सो अगर आपसे कोई पूछे या आपके क्वेश्चन आया तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑलवेज, नो, यू हैव टू से दैट इट इज नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर. ठीक है, अब क्या ये एसोसिएटिव है? यस, इट इज एसोसिएटिव. So you can say that if f is a function, let's say from x to y, and g is a function from y to z, and h is a function from c to w, तो हम कह सकते हैं, let's take another color, f of g of h is equal to f of g of h. ठीक है, सो आप देखो आगे पीछे इनको कर सकते हो आप. g of h टेल पहले निकालें, यानी कि g of h निकालें पहले, उसको फिर f of जो भी इनका कंपोजिशन निकलेगा उसके साथ कर लीजिए, या आप हेड एंड कर लीजिए, f of g निकाले पहले फिर उसको h के साथ कर ले, तो आप देख रहे हो कि ये एसोसिएटिव है. So I hope all these concepts are clear to you guys, and this will help you in solving your questions that are in your book. Any confusion or any doubt, you can just personally contact me, and I hope this lecture was beneficial for you guys. Remember these concepts and utilize these concepts on directly on your questions that are on your books. So see you in next